हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली वो वीडियो है सदगुरु प्रेजेस पीएम नरेंद्र मोदी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग काशी। जो सदगुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं भारत के, जो कि विश्व पटल पर जाने जाते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, तारीफ की। काशी को बदलने के मतलब काशी को ट्रांसफॉर्म किया मोदी जी ने, उसके ऊपर ये वीडियो है। सदगुरु ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। ये वीडियो है मिस्टिक्स ऑफ इंडिया नाम के चैनल से। वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं और इनके वीडियो को मैंने देखा, सारे वीडियो को, तो मैंने सोचा कि इस पर रिएक्शन देना चाहिए। वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं सदगुरु ने क्या क्या बात बोली है। Let's start. It used to be a bad experience to come to Kashi, in spite of whatever you saw it as a great thing. Thanks to our Prime Minister, he made this his constituency, because though his strengths and his political growth is from Gujarat, he made Kashi his constituency. That was a very visionary and a bold thing to do, because to go and win an election in a new place is generally considered politically stupid. But बहुत अच्छा बोलते हैं, बातों को समझना चाहिए इनसे। Stay tuned. Sadhguru is PM Narendra Modi. 2012, 10 years ago, when I came after 10 साल पहले। Kashi, some media came to ask me, Sadhguru, what is your impression? First time you come to Kashi. Can you believe it, till 2012 I had not come to Kashi. So they asked me. I said it's fabulous and filthy. I said, oh, how can you say this, da da da. Some people printed some negative things, but rest of them understood. I said, see, this is the whole problem. If you remove the filth, it would be just fabulous. But right now it's fabulous and filthy. Anyway, you have not seen Kashi at that time. Today what you're seeing thanks to our Prime Minister, he made this his constituency. Because though his strengths and his political growth is from Gujarat, he made Kashi his constituency. And that was a very visionary and a bold thing to do, because to go and win an election, a crucial election, in a new place, not from your hometown, is generally considered politically stupid. But he took that step, and ever since Kashi development has been happening. Otherwise you couldn't go 100 meters without spending at least 20 to 30 minutes by road. Everything was congested, everything was बहुत ज्यादा भीड़ है काशी में। Most people lived on the street, then in their homes. They did business on the पतली street. पतले सड़कें, गलियां। Filth was, you need a train to clear it, not a truck. That's how it was. And even the river was full of filth. So in the last 6 plus 2, 8 years, what's happened here? For those who have seen Kashi 10-12 years ago, it's a revolution in many ways. Well, revolution. First of all, you couldn't enter the temple. There was, because of this property dispute that is going on, it's sub judice. But whatever was entry was left was like this. And because North Indian people have a fascination for marble stone, they put marble everywhere, with people walking continuously. It became so smooth. And the day I came, it was drizzling a little bit, and I saw 2 older people. They just slipped and fell so badly. It was run in a certain way. I don't want to go into those details. It used to be a bad experience to come to Kashi. In spite of whatever you saw it as a great thing, people made sure, and the situation made sure, that it's a bad experience for you.
What has happened in the last 8 years' time is miraculous. Now there is a proper entry. Of course, there are disputes. You saw those small patches which are not fixed, small squares. Just something like 15 by 20 kind of square, not fixed because that's disputed property. It belongs to the other community, it's in the court. And we can't sit down and talk to each other and say, okay, you take this piece, I'll take this piece, let's settle it. No, because certain people don't want a resolution. Because problem is an investment. A problem is a great investment for a whole lot of people, because many people have risen to power over problems of other people. If you find a solution, then what do you have? Where is your ladder? Clearly, there are historical documents where clearly Aurangzeb has given a written order that this temple should be demolished. So whoever his men who came and demolished, they gave a completion report. That temple has been demolished, we are building a mosque using the same material, all these things they have given. So these historical documents clearly preserved and saying this, so there is no really property dispute, it's more settling the communities now to ensure that it doesn't go up in flames, so that everybody somehow settled one way or the other. It should be done because otherwise these festering wounds in a country is not good long term. It will… Now that it's come into people's awareness, you can't just again put them back to sleep as they slept for a few centuries. So, having said that, we should not forget it, but at the same time, we shouldn't be poisoned by resentment because of what terrible things happened in the past. Terrible things happened in the past. If you forget it, similar things may happen to you again. But the important thing is people who identify with those people who did terrible things. Today's communities have nothing to do with the invaders, but unfortunately certain number of them identify with those invaders. Such people should come to some sense of remorse and reconciliation, then this will be gone, because it's about everybody's life, not about fighting over what happened 300, 400 years ago. It's important that today's life goes on well and tomorrow's life goes on well. Well, yesterday's life was bad, so we don't have to spread that rot into today and tomorrow. So this wisdom is needed, but going by the constitution I think is the best thing, because that's a guideline for everything. Here we are. Already www, I walked into your minefield. तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो गया। बहुत बढ़िया इन्होंने बात बोला काशी के ट्रांसफॉर्मिंग को लेकर, कि मतलब कैसे पीएम मोदी ने काशी को ट्रांसफॉर्म किया। बहुत सारे मैं भी कभी जाता हूँ, मेरे यहाँ से काशी हम लोग की जो कमिश्नरी है, मंडल जिसे बोला जाता है, वो हमारी काशी ही है। और जब भी जाता हूँ तो वहाँ कोई ना कोई काम लगा रहता है। और जैसा इन्होंने बताया कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है कि उन्होंने बनाया, पहले पतले पतले रास्ते थे, जैसे आप मंदिर में जाना मतलब बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब जैसे कॉरिडोर बन गया है तो जो भीड़ है वो उसको मतलब उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस दे दिया गया है, बड़ा सा ग्राउंड की तरह बना दिया गया है, कॉरिडोर टाइप का है, बड़ा सा मतलब कैंपस है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, आप दर्शन वर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और कुछ विवादों को भी इन्होंने कहा कि मतलब दोनों पक्षों को देखना चाहिए। जो 300-400 साल पहले हुआ उसको भूल जाना चाहिए, जो हम आज रह रहे हैं और कल हमें रहना है, पीछे को सब भूल जाना चाहिए। क्या हुआ, जो हुआ पीछे हुआ, जो बेकार हुआ। और जैसा इन्होंने बताया कि औरंगजेब ने खुला मतलब लिखा गया है कि खुला उसने कहा कि मतलब मंदिरों को तोड़ो, डिमोलिश करो। तो यही सब बात, सदगुरु की बातें बहुत अच्छी होती हैं और मतलब इनकी बातें ऐसी होती हैं कि मतलब आपको समझ में तो नहीं आएगा, बहुत टफ बातें होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें, सुने
तो इनकी बातों को आप समझ सकते हैं। और इनकी बातें ये विश्व भर में प्रसिद्ध है सदगुरु हमारे। और थोड़ी मोड़ी हिंदी भी बोलते हैं, मैंने इनकी वीडियो देखा है। थोड़ी मोड़ी ये हिंदी भी बोलते हैं। और क्या कहना है कि एक अच्छे गुरु हैं, पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। जिस प्रकार सदगुरु है उसी तरह एक माता अमृतानंदमयी भी हैं, वो भी, उनकी भी पहचान पूरे विश्व पटल पर है। तो बहुत अच्छी बातें ये बोलते हैं और इनकी बातें सुनकर सबको अपनाना चाहिए, इनकी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों में बहुत ताकत होती है, समझने वाली चीजें हैं। तो यही वीडियो था। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिस्टिक्स ऑफ इंडिया नाम के चैनल से था, वीडियो बहुत अच्छा इनका रहता है। इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं हम आपसे जल्दी किसी और नए वीडियो के साथ और बढ़िया से रिएक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद।